Shall we start? Yes, sir. Why should we learn grammar? We speak fluent, sir. What do you mean by fluent? Why should we learn grammar? What's the use? To speak correctly. What do you mean by correctly? Without hesitation. Without? Hesitation. Without any mistake. What kind of mistakes do you find in a language? Meaningless sentences. Meaningless. Verbal. Grammar is to be learned to be universally one. ग्रामर का जो रूल है सबके लिए एक होता है ना, यूनिवर्सली वन, so that we are able to understand one another. If my simple present is your present continuous, how do we understand? We should have the same rule in a particular language. That is the first part. Second one, how do you communicate? What is the seat of communication? Speak. Speak. You can write also. We communicate through sentences, not through words. We communicate through what? Sentences. Yes, we have come to the point. Now, coming to our today's lesson, sentences basically are of two types. One begins with the subject, another with the object. So, the first part of a sentence, if it is the subject, it is called active voice. If the sentence begins with the object, it is called passive. These are the two basic structures of the English language. This is the first one. Now, today I will tell you, when do we use the active voice? Why should we use? To give importance to the subject. When we want to give importance to the subject, we use the active voice structure. For example, how many tenses are there? 12. 12. Not 12. 12. 12. How many sentences are we to learn in each tense? In each tense, we learn 8 sentences with I, we, you, he, she, it, they, to understand any context. So, 12 into 8, 96. over. Now, I come to the point. There are, in the active voice, whatever we have learned until now, all the tenses, they are called active voice sentences. Here, the structure is positive, negative sentences. Positive, negative, yes, questions. Good. I am trying to give you a clear picture of the structure of the English language. Now, 96 positive sentences, 96 negative, 96 positive questions, 96 negative questions. These come to 384 sentences. This is active voice sentences. ये नोट करो पहले, कहीं भी डाउट नहीं रहना जिससे थोड़ा खाओ, अच्छा क्वालिटेटिव खाओ, समझे ना? So whatever you learn it correctly without any doubt. Any doubt?
Active voice, how many sentences are there? 384. We call them tenses होते हैं उसको. हम tenses में कितने sentences सीखे? 384 सीख लिए. Next we have come to passive voice. That is, a passive voice sentence begins with an object. इसका opposite ना, ये subject से शुरू होता, passive voice object से शुरू होता है. अब डाउट आ तो पूछो, वरना I go to the next point. On the notes. Yes, active voice, have you understood? मैं जो tenses बता रहा हूँ, हम सीखे हैं, वो पूरे के पूरे active voice में हैं, क्योंकि हम subject से शुरू करते हैं. I go, I subject, उसके बाद verb आता है. Any doubt? डाउट है तभी पूछ रही. एक्टिव वॉइस के बारे में डाउट नहीं रहना. थोड़े बच्चे क्या करते हैं, टेंसेस सीखे हमने, एक्टिव वॉइस कौन सा? जो टेंसेस सीखे हैं वही एक्टिव वॉइस. दे आर द सेम, द अप्रोच इज डिफरेंट. यहाँ सब्जेक्ट से शुरू कर रहे हैं. आई गो, वी गो, यू गो, you go, he she it goes, they go. ये जो चार्ट है सिंपल प्रेजेंट का, समझे ना, ये एक्टिव वॉइस में है. इसे टेंसेस बोल के मत बोलो. These are tenses, but the structure of these sentences is active voice because they begin with the subject. ये important. Shall we go to the next point? Yes, sir. Good. Now, coming to passive voice. After the explanation, you start noting down. First point is, what is the structure? First comes, there should be a helping verb रहना जरूरी है. ये अच्छी तरह समझ लो. बगैर हेल्पिंग वर्ब के पैसिव वॉइस कर ही नहीं सकते. अगर कर दिए तो इंग्लिश लैंग्वेज. नेक्स्ट, नेम. व्हाट इज द फॉर्म? ये नोट करो. इन द पैसिव वॉइस द मेन वर्ब will always be in the form 3. V3 फॉर्म में ही रहता है. उसे पहचानने का आसान तरीका, सेंटेंस को पहचानने का आसान तरीका क्या है? अगर पैसिव वॉइस रहा तो उसमें आईएनजी फॉर्म आता ही नहीं, V2 आता ही नहीं. Always V3. Then there will be, generally speaking, by रहता है. यानी पैसिव वॉइस को पहचानने का तरीका समझा रहा हूं. अंधों की तरह मत पढ़ो. कम से कम एक अंक तो हो अंधों में, काना राजा. सो बंदे एक बच्चे को एक अंक है, उन्हें जी बादशाह वैसा. सो देन कम्स द लास्ट पार्ट, सब्जेक्ट लास्ट को डाल देते हैं. समझे? So a sentence in the passive voice begins with an object, ends with the subject. ये याद रखो. उल्टा. There are certain rules. Now, before going to the rules, let me tell you why should we or why do we use the passive voice structure? Active voice का तो बोल दिया. We begin with the subject. Passive voice object क्यों पहले लाते? What is the use? Why should we bring the object to the beginning? To specify and to give importance to the object. It is eaten by me. वहाँ it को जोड़ दे रहे थे. I ate it. मैं खाया. वहाँ I को जोड़ दे. I ate it. If you say it was eaten by me, we give importance to the object. वो चीज जो है मुझसे खाई गई. उर्दू में ऐसा आता है. कन्नड़ में कैसा आता है? ಅದು ನನ್ನಿಂದ ತಿನ್ನಲ್ಪಟ್ಟಿತು.
అది నాతో తినబడింది. తెలుగు. So every language has this structure to give importance. If you give importance to the subject, it is active voice. If you give importance to the object, it is passive voice. I will ask you a question now. It's like a test. There is an ad. What is the ad? Wanted a tutor. अब मुझे बताओ, what is the tense of this sentence? ये कौन से फॉर्म में है? V2, correct. V2 किस में आता है? Simple past में आता है. Yes. Correct? तो चाहिए था बोलना है. V2 past. For example, ऐसा है ना? I wanted. अब नहीं होना मुझे. चाहिए था. तो मेरा सवाल क्या है? फिर चाहिए था तो इसको प्रेजेंट में क्यों ले रहे हो? अप्लाई क्यों कर रहे हो? ये वांटेड कर रहा हूँ. रामनगर में लेक्चरर होना. लेकिन है यहाँ पास्ट टेंस में. प्रेजेंट में क्यों ले रहे हो? मेरा सवाल है. बोलो. सोच के बोलो. This is always taken as the present tense. But if you analyze the structure, V2 form is used in the simple past. Simple past का बोलते हैं ना ऐसा. लेकिन the meaning is taken in the present tense. Why? Because it is a short form of the following position is wanted. तो इसको नहीं बोलते हैं. Is understood. तो is आ गया तो present, was आ गया तो past. हमें कौन सा लेना है? Because it is an ad. Advertisement. Advertisement का short form है. Give me another short form of advertisement. Advert, correct. Spoken English forms बोलते हैं. These are technically called colloquial. ये लिखते हैं. Colloquial forms. Colloquial बोले तो spoken literally. Colloquial बोले तो spoken. Give me another synonym of colloquial or spoken. लिखो जी. Yes, the first letter is again C. One is colloquial, another is spoken. Give me communicative. Communication has two forms, written and spoken both. Huh? Conversational. Adjective बना उसका. Conversational English बोले तो spoken English. लिख लो. 3 words. 1 spoken, 2 colloquial, 3 conversational. Conversational English, colloquial English, spoken English. So विकिच क्या आ गया लगे. जरा हाईफाई बोले तो colloquial किसे भी मालूम होता. उन्हें confusion रहते हैं. क्या सीख रहा है बच्चा? वो कौन सी नई इंग्लिश सीख रहा है? colloquial. वो करते करते में चले जाते हैं. So did you get my point here? So there are 3 words we use generally to mean spoken. Spoken English, spoken French. For example, colloquial French, colloquial English, or conversational French. Don't forget this. Now,
Sometimes, as a short forms, we use the passive voice. ये passive voice में है। लेकिन लोग इसके बारे में सोचते नहीं कि आगे वांटेड कर दो एप्लीकेशन डाला उनको पूछो एप्लीकेशन डालने के बाद फिर वांटेड अब नहीं होना ना जी पास्ट टेंस में है हमें तो वो क्या कि एप्लीकेशन ये नौकरी होना इंग्लिश में होना बाल की खाल मत निकालो anyway our point is sometimes in general or everyday English we use the passive voice जैसे wanted is passive voice the full sentence is the following position first is wanted by कौन डालो so instead of using the full sentence they take the main or the key word wanted thus we use passive voice very less we do not use it everywhere for example in the active voice the meaning is straight in the passive voice if the subject is taken to the end the meaning is also told in a roundabout way ulta bole aisa bole but it has its own significance importance now any doubt so remember this structure sentence pattern बोलते हैं या sentence structure कैसा है now you can divide this passive voice positive sentences again negative positive question negative question now coming to passive voice the first point is object plus helping verb plus V3 plus by plus this is the first rule. To identify a sentence in the passive voice, the sentence structure is like this. Second point, all the 12 active voice tenses do not have the passive voice. बच गए हम तो पूरे के पूरे सुनना पड़ता active voice how many tenses are there 12 verbs passive voice only which tenses do not have the passive voice perfect present perfect continuous past perfect continuous future continuous future perfect these four tenses do not have the passive voice you should immediately ask me a question why क्यों नहीं है पैसिव वॉइस इनके क्या करे हो क्यों सजा दी हो there is only one answer if you make the passive voice of these four tenses you are unable to catch the meaning नहीं मालूम हुआ क्या बोला जो बख्ता है बख्त बोले तो याद रखो नसीब आवर फारसी में आवर्दन बोले तो लाना आवर्दन लाना नसीब लाने वाला बोले तो नसीब वाले को बोलते हमें घर चले क्या बख्तावर में जाएगा लेकिन बख्तावर इज अ गुड वर्ड anyway coming to my point if
we change these into passive voice, we are unable to understand in communication. We are unable to get the meaning. Meaning निकालना मुश्किल हो जाता है word से. For example, present perfect continuous. It has been being done by me. Therefore, the presence of being and being is confusing. यहाँ हो गया है, यहाँ अभी हो रहा है. आधा सारा, आधे तीतर, आधे बटेर. एक इडियम है उर्दू में. मत बनो आधे तीतर, बटेर तो बनो. So, it is very difficult or confusing to get the meaning of these tenses if we change them into passive voice. Any doubt? No, sir. Good. How many tenses in the passive voice are there? 8. Good. Now, first point is subject, verb, objective, active voice, passive voice. Active voice, passive voice. Second point, no passive voice. So, 1, 2, 3, 4, noted. Only 8 passive voice में 8 tenses हैं. वो कौन से मैं लिखा दिया हूँ ना? वो चारों को निकाल के बांट दिए. Yes, पूछो ये किसे नहीं मालूम है? मालूम हुआ कि नहीं? एक्टिव वॉइस में 12 टेंस हैं, पैसिव वॉइस में वो 4 जो मैं लिखा है वो नहीं है पैसिव वॉइस में. अब एक्टिव वॉइस में क्या होते हैं? 12 into 4 टाइप्स. कितने हुए? 96. ये पूरे मिला के कितने होते हैं? 4 टाइप्स में 3 वो तो लिख लिए हैं ना ये. गुड. अब यहाँ का हिसाब रखो. एक में कितने आते हैं यहाँ? 8 सेंटेंसेस में कितने हैं टेंसेस? ये टेंसेस हैं, ये सेंटेंसेस हैं. कितना हुआ? 64. 64 करेक्ट. 64 तेलुगु मीडियम. 64. How many types of sentences are there? Positive, negative sentences, positive question, negative question. 4 4 16 ఒకటి. కరెక్ట్. 256 వాక్యాలు, వాక్యಗಳು, sentences. డౌట్ है तो पूछो जी. How are these 256? Did you understand? Yes, sir. One more. In every tense, 8 sentences. 8 tenses are there in the passive voice. 64 positive sentence, negative sentence, positive question, negative question. So there are 256 sentences. Second one, no passive voice. I have given you the list. 4 लिखा है. What are they? Present perfect continuous, past perfect continuous, Future continuous, future perfect. These 4 tenses do not have the passive voice pattern. So, this is active voice sentences, this is passive voice. तो इसमें मिला इसको पदी, वकटी, कमिटी, पद्नालु, वकटी, आर. Active
बोल दिया बोले तो उससे इंग्लिश है कोई Who will one tell? Who will tell? Huh? Who will tell? नेक्स्ट क्लास में बोलना दिस इज ए प्रोजेक्ट असाइनमेंट प्रोजेक्ट बोले तो इंजीनियरिंग का Active voice representing. assignment is you should recite और जबानी बोलना दिया था वहां से नहीं हम वहां खड़े बोलते रहे यहाँ आके बोलना note down this is an assignment active voice passive voice this will give you confidence याद रखना किसी शक के बगैर यहाँ आके बोल देना बस any doubt shall we go to the next point point number 2 is over यहाँ पांच बच्चे नहीं समझे हाँ यहाँ पांच बच्चे नहीं समझे नहीं समझेंगे तो कौन कौन खड़े हो जाओ बेटा आरिस बेटा नहीं समझा मालूम है इन्हें भी नहीं समझा अपना नहीं समझ में आ रही ठीक है so shall we go to the third point now how to change the structure from the active voice to the passive voice structure the third point is add being to any continuous tense ये एडिशन में लिख लो राइट द एडिशन we have to add certain words to the sentences in the passive voice any continuous tense takes the word being along first point addition second point add being to any perfect tense next the third point here is add be to the simple future tense यहाँ क्या रहेगा देखो being ये addition में आते याद रखो passive voice में आने वाले इसमें ऐड करना यानी एक्स्ट्रा वर्ड है एक्टिव वॉइस में ये नहीं रहते पैसिव वॉइस में रहते मैं एक नमूना बताता हूँ कैसा हो एनी डाउट अबाउट एडिक्शन फोर्थ पॉइंट when there is no helping verb in the passive in the active voice what should we do हमारे पास थोड़े for example in positive sentences we do not have helping verb in the simple present and simple past में देखो example I see it simple present I saw it simple past where are the helping verbs helping verbs नहीं है यहाँ क्या है क्या देखो am or is have has do does did will shall is इनको helping verbs also कहाँ है यहाँ है क्या देखो what is the rule in the passive voice there should be a helping verb तो नहीं तो क्या करते हैं पड़ोसी के
फर्क सबको बोलते हैं 1000 रुपये दो जी गाँव में जाकर दे दो yes verbs are divided into देखो helping verb and ये helping verb shows tense बताता है ये main verb shows action इतना है आपके लिए शुक्रिया yes ये helping verb लिख लीजिए yes a helping verb shows the tense of a sentence. A main verb shows the action of the subject. Any doubt about this? Then, when there is no helping verb, we have to borrow. In Kannada, borrow andre hogo anta helbedi. Borrow. English book Kannada. English borrow. So, next point. After the third point, I am going to explain to you what is borrowing. Addition is over. Add करने का हो गया जी अब खर्चा लेने का वक्त आ गया. So, in the simple present positive sentences में वो लिख लो. अंधा उठे बनी जा कुटिया अंगूठे को मार लेता. ये क्या क्लियर याद रखो जी. Simple present में कौन से sentence positive when there is no helping verb we borrow. What? Am, are, is. ये तीनों में से जो agreement होता है subject का उसके हिसाब से borrow करो. In the positive structure, in the positive sentences to be clear, there are no helping verbs in two tenses. Simple present में नहीं है, simple नहीं होता. उस वक्त हम पड़ोसी के रूप को बोल के याद कर लेते. So simple past में क्या कर्जा लेते हैं? Simple past में ये भी positive was were ये दो खर्जा तो हमारा पूरा बराबर हो गया. When or wherever there are no helping verbs, we have filled in, fill up कर दिया. Any doubt about borrowing? Borrow क्यों कर रहे? Positive structure, positive sentences में helping verb नहीं रहते. जैसे बताया हम I take it. इसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? ये मेन वर्ब है. हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ. ये सिंपल प्रेजेंट का I took it. यहाँ कहाँ है? When there are no helping verbs, we borrow accordingly. Any doubt about borrowing? Shall we go to the fifth point? Note down. Any doubt about this point? बहुत अच्छा सवाल करें. बैठो. Good.
देखो तुम्हारा रूल एक्टिव वॉइस में आने वाला, तुम्हें है आंध्रा में, कन्नड़ में बात करें तो मैं एक्टिव वॉइस में रह के पैसिव वॉइस को लगा दिया तो रूल कैसे होगा? तुम्हारा रूल जो है ये लगाने का वो एक्टिव वॉइस में। व्हाट इज द रूल इन द पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर? द V3 फॉर्म इज ऑलवेज यूज्ड। V3 ही इस्तेमाल करते हैं, ईस तो रंदे, वास तो रंदे, क्या ठीक है समझे? डॉक्टर मना कर दिया है पेशेंट को मत दो, हम सब घर में कोर्स खाते हैं, तुम्हें खाओ, पेशेंट को मत दो। Same is the case here in the active voice is ing, ये बोल रहे ना तुम, ये एक्टिव वॉइस का है। पैसिव वॉइस में is V3। how to recognize ये एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर, ये पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर, ये याद रखो, देखते ही पहचान लेना। Any doubt? Is it clear? Shall we go to the fifth point? Yes. Fifth point is, in the negative structure, we use or when simple। देखो जी, गौर से लिखना बंद करो, पहले सुन लो। मस्तक ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, మనసు బాగుంటే పుస్తకం ఎవరికి కావాలి? सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव स्ट्रक्चर बोल रहा हूं, आई डू नॉट ईट इट, इसको पैसिव वॉइस करें तो वी डोंट यूज, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, डिड नॉट, वी डू नॉट यूज डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट in the passive voice। तो मतलब क्या, सुनो ये लिखो बस, do, does, did, ये तीनों एक्टिव वॉइस में आते हैं। पैसिव वॉइस में इसको सब्स्टिट्यूट करो, and or is, इसको was, was। पैसिव वॉइस में ये तीनों को भूल जाओ, एज हेल्पिंग वर्ब्स, इनको इस्तेमाल नहीं करते हैं, करे तो इंग्लिश लगती। देखो छोटी सी मिसाल, आई डू नॉट ईट इट है, इट सिंपल प्रेजेंट में वाज क्या है? इट इज नॉट इटन। इज कहां से आ गया? ये रूल देखो, बराबर? एनी डाउट अबाउट दिस? ये बहुत होशियार है, बहुत सौ को नहीं मालूम है, वहां भी पैसिव वॉइस में डू नॉट बोलते रहते हैं, बराबर है ना? मतलब बोल रहा हूं, 10 बोल रहा हूं, लेकिन स्ट्रक्चर कौन सा है? पैसिव वॉइस में we do not use do, does, did as helping verbs। मेन वर्ब जैसा यूज करो, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जैसा नहीं आते हो। एग्जांपल, आई डिड नॉट सी इट, इसको बनाते हो इट, देखो पास्ट टेंस में डिड नॉट, इट वाज नॉट सीन बाय मी। अब यहां देखो क्या है, यहाँ क्या है? Because this is in the active voice structure, this is in the passive voice structure। ये बेसिक स्ट्रक्चर आ गया तो तुम्हें ताजमहल तो बन जाओ, ताजमहल होटल तो बन। Yes, now note down this point, point number 5।
फिर बाद में नेक्स्ट आने के बाद पूछना नहीं ये कहीं को आया वो कहीं को आया। घर पे ले जाओ किताबें ये सब भूल जाओ, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स भूल जाओ, झगड़े लगाना भूल जाओ। इंग्लिश आ गई तो तुम दुनिया में कहाँ जाओ अकेले, किसी को साथ ले गए प्रॉब्लम। यस, फिफ्थ पॉइंट याद रखना जी, कितने कितने पॉइंट है। तुम्हें किसी टीचर को पूछो उन्हें बोल देंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इंग्लिश में कितने पॉइंट्स हैं। बड़ा ही दे चाला नहीं रोम्बा रोम्बा रोम्बा, लेकिन कितने का बोला ना जी, 5, 6, 7 बोलो। Any doubt? Now, shall we go to the examples? Yes. Five points are over. Now, the sixth point is, I'll give you an example. Active voice, 12. Passive voice? Huh? फिर आ गए वापस। Narrow track. मीटर के पुराने गाने होते थे हमारे बचपन में, मीटर के छोटे गाने, हमें नीचे उतर के चढ़ सकते, उसको मीटर के छोटी गाड़ी, narrow gauge. So now divide this active voice, passive, he, now sixth point, note down. Before going to the example, there is another point. Yes. The last point is changes आते हैं। हैदराबाद जाते ही लोग बदल जाते हैं। I am pulling his leg. For example, pronouns बदल जाते, मुश्तबा नहीं बदलते, pronouns बदलते, because मुश्तबा is a noun. I becomes आई रहा तो मी बनाओ, मी रहा तो आई बनाओ। We, you, pronouns change. Look at the board and start writing. Pronouns change. We, us. This is you, yes. Us.
inform me that we have a class. I forgot. I am in Ramnagar now. Tomorrow. Tomorrow. Okay, fine. Sure. Yes, any doubt? There will be humble. Number one, simple present. He, is, present continuous. He is eating. पूरे short form लिख देता हूँ. Present perfect. He has eaten. Present perfect continuous. He has been eating. Present tense is over. 1, 2, 3, 4. Next 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Now, simple past. He ate it. Past continuous. He was eating it. Past perfect. He had eaten. He past perfect. He had eaten it. He past perfect continuous. He had been eating it. He will eat it. He will be eating it. He will have eaten it. He will have been eating. This is active voice. हो गया? This is active voice. Now passive voice. After writing down, I will be writing and explaining to you how we change them. Any doubt about the active voice structure? Who is that? This is active
Now coming to passive voice. See here, subject. Object. ये object ना, it यहाँ पे लेके आ गए. When there is no helping verb, we have to borrow. इसके साथ कौन सा आता? कौन सा V3 form? By he changes into any doubt? अब उससे पहले mark those tenses which have no, देखो, no passive voice. Sorry. No passive voice. No passive voice. ये 4 मार्क कर डालो, 8 हो जाते. देखो, present perfect continuous, past perfect continuous, future continuous, future perfect continuous. ये चारों को passive voice नहीं है. अब बनाओ, यहाँ सबके साथ लिखो. It हर जगह आता है. उसके बाद is in any continuous tense we add, ये याद रखो. The difference between simple present and present continuous is ये नहीं रहा तो ये हो जाता. देख लो, ये same, change नहीं. यहाँ इट के साथ क्या आता? has. परफेक्ट टेंस को क्या लगाना? eaten by, वो सेम रहते ना जी, वो नहीं बदलते. देखो नेक्स्ट, नो पैसिव वॉइस. उसके बाद इट आ गया पास्ट टेंस में. borrow, there is no helping verb here, you have to borrow. ये सेम ना है, ये बदलते नहीं हो. ये तीनों नहीं बदलते, याद रखो. ये भी नहीं बदलता, याद रखो. नेक्स्ट, इट was क्या लगाना? eaten by. next, past perfect had क्या लगाना? इसको क्या लग कहते हैं? it will क्या ऐड करना? मैं ऐड करने के रोंग कर रहा हूं. खत्म काम. पैसिव वॉइस बहुत आसान है. मैं पढ़ देता हूं, सुनो. It is eaten by me. Eaten by him. It is being eaten by him. It has been eaten by him. No passive voice. It was eaten by him. It was being eaten by him. It had been eaten by him. No passive voice. It will be eaten by him. No passive voice. It will have been. It will have क्या ऐड करना? No passive voice. इतना लिख लो. इतना याद कर लेकर आते हो गाँव से. ये ओरल बोलना है, वहां जैसे नहीं. यहाँ पे क्योंकि बहुत दिनों के लिए जा रहे हैं. और फिर डॉक्टर पूछ लो जल्दी.
5 मिनट में पढ़ा जाते हैं ये बरकड़ रहा है लोग ऐसी वॉइस वो बच्चे भी लोग नहीं पूछते कई वो शर्मिंदा हो कुछ अच्छी बात आ गई बात हम ना सीख रहा बच्चे कुछ बोल डर बच्चा एकदम नहीं समझ रहा ना सर बोले ना पैर बोले कैसा समझ में आता yes over now we'll go to some vocabulary I give you 20 words today to learn ऐसे words जो हर खबर पे इस्तेमाल में आते हैं चाहे written English हो या spoken English हो चलो yes start writing now start writing vocabulary substitute one word मैं मीनिंग देता हूँ वर्ड को मैं डिस्कस बोलूँ yes the art of cooking Culinary skills. one word बोले तो तुम्हें दो बोलो cookery the art of cooking over next related to cooking cooking के बारे में कैसे बोलते ये सेक्शन कुकिंग का है जैसा कुकिंग सेक्शन में बोलते हैं there is another word the first letter is a C culinary कलील भाई नहीं बोलना क्या सर? related to cooking or about cooking related to cooking culinary पढ़ना उसे culinary नहीं पढ़ना CULINARY इसको जैसा लिखते हो वैसा नहीं पढ़ना culinary culinary next 2 weeks of 14 days fortnight लिख लो 2 weeks or 14 days. yes fortnight one word लिखो नहीं तो किले की रात हो जाएगी yes feel like vomiting first letter N nauseate feel like vomiting Say spelling. nauseate nauseate हम नो सुन रहे हैं जी यहाँ पर आ जाओ यहाँ से जाने को yes a revolving gate a revolving gate a revolving gate घूमने वाला गेट लिख लो जी revolving gate that allows one at a time पार्कों के पास होता है जी अंदर जाते घूम लेते जाते तो turnstile correct but see the spelling देखो यहाँ देखो स्टाइल का स्पेलिंग तुम्हें ST वही मत लिखो स्टाइल मार रहे turnstile a revolving gate that allows one at a time next feel sorry for something regret अफसोस करना next sorry expensive comma standard comma standard comma of
a high class, posh, of a high class, expensive, standard or of a high class. क्या वर्ड है वो? Posh. Posh स्कूल बोले तो ये क्लास के ऊपर रहती थी. So spelling. Posh एरिया बोले तो high class एरिया. POSH. POSH. Next, antonym of friendship. वो गलती हो. देखो ऐसा मत लिखो. यहाँ देखो. क्या स्पेलिंग है वो? यन मीठी है वो, ये मीठी नहीं. नेक्स्ट, one who informs. No. Informant. F-A-N-T. One who informs. Informant. One who informs against criminals. Informer. भिखारी की देश में एक आदमी बैठा था. पुलिस वाले बताने वाला. आज रात को गाड़ी इधर से गुजरने वाली है. वो जाते हैं रामनगर में. हनुमंसराय से गुजरते. हनुमंसप्पा से आते. पुलिस वाले को रिपोर्ट दिए तो इन्फॉर्म. दोस्त को दिए तो यस. Next, travel regularly by bus, train or airplane. Commute. हमें क्या यूज करते हैं जनरली? He is traveling. Traveling नहीं बोल रहा हूँ. Commute. Traveling regularly by bus, train or airplane. Say spelling is C-O-M-M-U-T-E. Commute. One who commutes is a commuter. Commuters strike करें. आने जाने वाले strike कर डाले. Commuters strike. Commuter. If a bus, train or airplane travels every day, what is the word? Fly. If a bus, train, airplane travels regularly, आदमी रहा तो कम्यूट बोलो जी. बस से ट्रेन एरोप्लेन रहा तो लेकिन लोग कंफ्यूज कर लिए हैं. गेस करो क्या कंफ्यूज कर लिए? देखो इसको लोग कैसा बोलते हैं? किसको? इसकी जगह ये बोलता है. सुनने वाला भी सर हिला रहा, गर्दन दर्द हो जाएगी. Ten buses fly between Bengaluru and Mysore. One bus flies between Bangalore and Mysore. एक ही बस जाती है आगे. जाना छोड़ो. Any doubt? Flying. synonyms. No, you have used this. Sometimes we do not have synonym. Traveling हो सकता है. Same word I have seen in front of the factory which made You are asking the meaning, not synonym. Yes. If it is used with wood, plywood, Means wood what? का है. ये wood के बगैर.
कर सकते हैं कौन से सेंटेंस में बोलो 4 buses have been flying 4 buses have been flying between Charminar and Secunderabad platform. Any doubt? Next. Yes. Sir, form of flies. जब इसमें आज देख रहे हैं बोलते हैं तो क्या कर रहे हैं हमें y को I बनाने के ed लगा रहे हैं yes how many words are over 13 closed hand fist लिख लो Close hands. closed hand next extreme anger बहुत गुस्सा आ गया Furious. देखो एक्सट्रीम एंगर बोलो तो नाउन ना तुम्हें एडजेक्टिव कहीं बोलो देखो फ्यूरी नाउन फ्यूरियस एडजेक्टिव ब्रूस ली की एक सिनेमा का नाम बोलो फिल्म का Fist of fury. Yes. Next one. Give me the two meanings of the word contain. Contain के दो meaning है, बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसको. One is note down. Two meanings of the word contain. हर जगह इस्तेमाल में आता है. To include, contain. It contains oxygen. Contain तो है ना. और एक contain मतलब control. Example of control. Contain. Yes. One is it contains oxygen. Another is the police. Police है वो police नहीं जी. पकड़ के जाते. हाँ. Police. Police बोले तो गुस्सा आता. कभी-कभी ऐसे होता ना. Police police बोले नहीं आते. The police was sent to contain the violence. Contain तो control करना. वो violence को control करने police को भेज दिए. लेकिन उर्दू में police है वो. देखो उर्दू में ऐसा लिखते हैं. Police. ऐसा लिखता है. So in English it is police. The police was sent to contain the violence. Next, a general list of books. A general list of books. One word बोलो तो दो बोलो. A general list of books. Catalog. Catalog. देखो, this is British English. This is American English. See, look at the spelling. GUE आया तो British मॉडल है. लास्ट में GUE कहे तो एक्स्ट्रा है ले लेते. That is American model. Catalog. Next. Yes. A list of books on one or particular subject, topic. एक ही topic पे list.
लिख लो. A list of books on one topic or a particular topic or subject. Bibliography. Bibliography पढ़ना जैसे bibliography. Bibliography. स्ट्रेस कहाँ है? ऑप है. Bibliography. Yeah. How many words are over? 16. 18. The next one. Written or printed. Written or printed. Poster carried in hand. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿರಲಿ. उसे क्या बोलते हैं? हाथ में ले जाते हैं. Printed or yes, printed. Yes, poster carried in hand. क्या बोलते हैं जी उसे? First letter P. Yes, placard. 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 P-L-A-C-A-R-D. Yes. Next, printed picture, photograph. Notice. Printed picture, photograph. Or notice. Notice. We stick to a wall. दीवार पे लगा देना. उसे क्या बोलते हैं? वो बहुत बड़ा हो. काम बड़ा काम लेते. Poster. Poster. Next one. 20 over. The last one. A large board. Used for advertisement. क्या पढ़ना है उसे? Advertisement. Advertisement. Hoarding बोलते हैं. सलमान खान का बड़ा पिक्चर का मकसद एडवर्टाइजमेंट. Any doubt? We'll finish. Yes, sir. These are the two areas I have given you as an assignment. Yes, sir. Active voice and passive voice. 600 sentences. शायरी